Thank you, all my students. In today's class, we should be discussed very beautiful and very attractive poetry sections. And the name of the poetry is the Psalm of Life. And it is written by the great writer of the English literature. This is called H.W. Longfellow, Henry Wadsworth Longfellow. Different categories of poetries are there. विभिन्न प्रकारर poetry अछि, विभिन्न प्रकारर स्वादर कविता रहिछि. But this poetry is totally changed. This poetry is totally phenomenal. This poetry just suggests to you what is the real value of the life. And life is a thing which has no certainty. जीवन गोटे एमितिका जिनिस जो थे कि कौन जिनिस वास्तवता न थाए. Everything in this world, all things in this world, what will be seen in our eyes, all that temporary. We cannot enjoy every moment. We cannot enjoy every hours, every seconds in this world. This world is made by the God who just sit on the heaven and see that all the activities of the people. So कहिबार अर्थ बुझेबार अर्थ ये कविता ये कहानी ए psalm of life. psalm अर्थ प्रेयर स्तव प्रार्थना of life. जीवनर प्रार्थना जीवनर स्तव. ताले जीवनर प्रार्थना बा जीवनर स्तव केमिति ना जीवन ये जीवनर definitions. So many philosophers suggest that many types of the definitions about the life. But life is very little thing. In this little moment of the life, we have to work, we have to work, we have to work. ये स्वल्प जीवन काल भितर ये स्वल्प समय भितर आमको बहुत आगे जीवार अछि, आमको बहुत कर्म करिवार अछि. तेणु एइभଳି एक वास्तवतार कथा को नहीं, एइभଳି एक रियलिस्टिक कथा को नहीं, जीवनर अर्थ को नहीं, जीवनर स्तव को नहीं, कविता की कंपोज करिसंती, डायरेक्ट करिसंती द ग्रेट डायरेक्टर of the English literature. This is called H.W. Longfellow. It is an inspirational poem. ये एक उत्साहपूर्ण प्रेरणापूर्ण कविता जो कविता भितर आपण माननकु इंस्पायर मिलिबो, मोटिवेशंस मिलिबो, पॉजिटिव एटीट्यूड्स आपण शिखिबे, पॉजिटिव एनर्जी शिखिबे. But all my friends, before to going to the poetry sections, I have to change to you, I have to talk to you the three questions. And the three questions is, as a human being, गोटे मनुष्य हिसाब रे जदि निजे रियलाइज करिबा, जदि निजे भाबिबा, जदि निजे अनुभव करिबा, ये साम ऑफ लाइफ कोन ना. ये साम ऑफ लाइफ को बुझिबा पूर्व, before to understand the poetry, the meaning of the poetry, we have to know the three questions. And the first question is, why I born? Why I born in this world? This is the first question just comes to the every human being's mind. प्रत्येक मनुष्यर मन भितरे, प्रत्येक मनुष्यर अंतरात्मा भितरे ये कथा निश्चित रहिबा दरकार, why I born? And the second question, if I born, what is my work? That work is the earning of money. That work is the building of the buildings. This is not work. So what is the real work of the life? What is the real work of the life? To getting a good job, to earning a dollars and pounds and money. What? This is the second question. And the third question, if I born, if I do my work, where I go? So this is the third question. Where I go? We go to the park, we go to the park restaurants, we get to the 5-star hotels. This is not our destination place, but the place is. If you realize, if you analysis in your mind, if you ask to your heart, then you know that why I born, what is my work, and where I go. ये जीवन तीनोटी प्रश्न, जन्म कहीं नेली, कर्म कौन, जीवी कौटी, ये तीनोटी प्रश्न मनुष्य जो दिन उत्तर पाई जाए, से दिन तार ह्यूमैनिटी ह्यूमन हो जाए, इनोसेंस हो जाए, सिंपलिसिटी आसी जाए, ईगो साइड ऑफ सही जाए, सेल्फिशनेस डिजापियर हो जाए, प्राउड कोआड़ उठे जाए. अब ठीक है, ये बड़ी कथा को नहीं, कि ये बड़ी मोरल थिंकिंग्स को नहीं, कि ये बड़ी
नैतिकतार कथा को नहीं कविताटीर नाटी हेछि ए साम ऑफ लाइफ जीवन स्तव जीवन प्रार्थना बहिर प्रथम स्टांजा कवितार प्रथम स्टांजा आज कवि से लोक मानू कमेंट्स कर लोक मानू क्रिटिसाइज कर लोक मानू आज कमेंट्स एंड क्रिटिसाइज कर दोस थिंग्स दैट द लाइफ इज सैड एंड पर्पजलेस ए दुनिया रे किछि एमिति मनुष्य अछंती ए दुनिया रे किछि एमिति मनुष्य अछंती जो माने भाबंती जीवनटा होछि दुःखपूर्ण जीवनर उद्देश्य किछि नै नो नो माय डियर फ्रेंड्स यू डोंट थिंक दैट यू ऑलवेज बी बिलीव ऑन द गॉड आपण भगवान को ऊपर विश्वास करिवार अछि भगवान को ऊपर विश्वास करिवार अछि ओडिया रे कथाटी अछि करी कराउ थाए तो ही तबे अन्य गति नाही if I can speak if I can move if I can teach to you this is not the strength of my body this is the body this is the strength this is the power this is the courage this is the voice just given by the God ये कथा ये चाहनी ये स्वर सब तंकर तेणु प्रथम स्टांजा Tell me not in one full numbers, life is but an empty dream, for the soul is dead that slumbers, and the things are not what they seem. This is the beautiful first stanza of this beautiful poetry. ये कवितार प्रथम स्टांजा ती आरंभ होइछि कवि कहउतंती टेल मी नॉट इन वन फुल नंबर्स टेल मी नॉट मते कहना ना कोन कहिबिनी तमरे वन फुल नंबर्स मते कहना वन फुल्स मींस सैडफुल दुःखपूर्ण नंबर्स मींस कथा भाषा तबे से मते दुखर कथा सुनाओनी तबे से पर्पजलेस कथाबार्ता मते कहनी तबे से डिप्रेसिंग कथाबार्ता मते कहनी टेल मी नॉट इन वन फुल नंबर्स लाइफ इज बट एन एम्प्टी ड्रीम आज मनुष्यर जीवन एम्प्टी हे जाइछि फंपा हे जाइछि आज मनुष्य ड्रीम देखिबा कथा पॉजिटिव रो आज मनुष्य ड्रीम देखिबा दरकार किछ भलो जिनिस रो आज मनुष्य स्वप्न देखुछि केवल नेगेटिविटी और नेगेटिविटी रो सो इट इज द सजेशंस it is the advice it is the comments to those people sei lok manu ko comments kara jauchi sei lok manu ko criticize kara jauchi jo lok mane bhabanti life is nothing mo जीवन तो किछि नाही भाई मो जीवन ता तो बेकार हे गला मो जीवन स्वप्न सब धोली साथ हे गला नो 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 तन कवि कहिले टेल मी नॉट इन वन फुल नंबर्स लाइफ इज बट एन एम्प्टी ड्रीम ए जीवन ता होचे को फंपा स्वप्न हे जाइछि मनुष्य ना काहे कि फंपा स्वप्न फॉर द सोल इज डेड आज मनुष्य पड़िया मरी जाइए आज सोल मरी जाइए आत्मा मरी जाइए आज ह्यूमैनिटी लॉस्ट हो जाइए आज इमोशंस मनुष्य मन भीतर कुआडे हजि जाइए जदि आजिकार टुडेज सोसाइटी रे ह्यूमन भीतर जदि ह्यूमैनिटी थांता ताहले कोन 5 वर्ष छोट पिला कोन गड़बड़ करा हितंता की आज जदि मनुष्य पकरे मनुष्य पड़िया थांता ताले बुढ़ा बापा मां को पुओ माने झियो माने नै कोन वृद्धाश्रम रे छाड़ी थांते की So today's world, today's society, today's modernity, today's sophisticated world, we told we are modern, we told we are ultra modern, we have the best technology, we have the best thing. What best? This is not best. This is the called that beastness. याको best को हटाई नहीं, याको beast को हटाई. Tell me not in one full numbers, life is but an empty dream. आज मनुष्यर जीवनटा फंपा स्वप्न हो जाइए फॉर द सोल इज डेड आज मनुष्यर अंतरात्मा आज मरी जाइए मनुष्य पड़िया हो जाइए कहीं ना आत्मा आज स्लंबर हो जाइए गभीर निद्रा शोई जाइए फॉर द सोल इज डेड दैट स्लंबर माने डीप स्लीप आज गभीर निद्रा मनुष्य आज शोई जाइए आ जते बेले मनुष्य राइट एंड रॉन्ग रो डिसीजंस बुझी पारे ना जते बेले मनुष्य डोंट टेक the right decisions or wrong decisions what is benefit for him or what is lose for him कोउटा पे खराब आ कोउटा पे भलो जेतबे से जिनी परना जेतबे स्वार्थर मनुष्य पड़ी जाए जेतबे अहंकार मनुष्य को ग्रास करी जाए and the things are not what they seem things अर्थ जिनिस सीन अर्थ जणा पड़ीबा जो जिनिस जेमिति जणा पड़ीबा दरकार मनुष्य जेतबे पाप रे बुडी जाए मनुष्य जेतबे लोभ रे बुडी जाए मनुष्य जेतबे गर्व रे बुडी जाए ताको भूल टिको भी ठीक देखा जाए और ठीक ताको भी भूल देखा जाए दिस इज द फर्स्ट स्टांजा ये थी प्रथम स्टांजा